And already yesterday we have completed one topic that is called Jacobian. We have done that. Today I want to discuss one more topic from this function of several variable, and the name of that topic is maxima and minima. Maxima and minima. So what actually we are going to do it here is we are going to find out the maximum value and the minimum value of the given function. Okay, and for that we required some working rule, how it works when the problem is given, how we are approaching to the answer. This one we are going to write in words. That is called working rule. Now look at working rule. We have to follow some steps here. That step number 1 is let f of x comma y be a given function. Let f of x comma y be a given function. Actually, sometimes the function will be given. Sometimes we are not given the function value. We have to look at the situation and we have to frame the function value. That is our step number 1. In step number 2, we have to find out P, Q, R, S, and T. Where this P is nothing but we have to find out the partial derivative of f with respect to x, comma q means the partial derivative of f with respect to x 2 times. मतलब f को with respect to x differentiate करना है partially. P, Q, then R. Is equals to f double x. Sorry, here is a small mistake. Small mistake for this one. Q means with respect to y actually. R means double x. Double x. P, Q, R, then S. S means we have to differentiate x, whatever already we have, this one with respect to y. P, Q, R, S, T. This is step number 2. In the step number 3, we have to equating P and Q. Whatever we are getting here, P and Q, that P and Q equating to 0. Those values of P and Q equating to 0. After that, we get after equating to 0, we get stationary points. Stationary points, or those points are also called critical points. Critical points. And those values are also called extreme values. Extreme values. All will have the same meaning. Extreme values, critical points, and a stationary point. All will give you the same meaning. So this is step number 3. After this one, after getting the critical points or stationary points, what we have to do it here is we have to, in this 4th step, we have to calculate. We have to calculate the value of R, T,
minus s square. RT minus s square value we have to calculate. Okay. And now some cases arises. After calculating RT minus s square, case 1. Case 1. What happened here is if RT minus s square, RT minus s square less than 0 and R is also less than 0, then point, जो भी पॉइंट पे ये कंडीशन आ रहा है आपको, पॉइंट A comma B, whatever the point A comma B is called थोड़ा अलग वर्ड्स में लिखेंगे. If RT minus s square less than 0, R less than 0, then the function is maximum. दोनों भी लेस देन है तो फंक्शन मैक्सिमम में रहेगा. सेकंड पॉइंट, सेकंड केस, केस नंबर 2. Case number 2 is if RT minus s square less than 0 again and R value greater than 0, then function is minimum. Function is minimum. Case number 3. Case number 3 is if RT minus s square value again greater than 0, then the point is saddle point. Saddle point. I will give you the definition of saddle point later on. This saddle point. What is saddle point? I'll discuss now only. अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा saddle point किसको बोलते हैं. Fourth case also arises here. If RT minus s square is equal to 0, then we are unable to decide the nature. We are unable to decide the nature of the function. We are unable to decide the nature of the function. So these are the steps involved here. अच्छा देखिए, सैडल पॉइंट किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन भी ले लीजिए आप. सैडल पॉइंट, saddle point, a point where in which the function is neither maximum
नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नीदर मैक्सिमम nor minimum is called saddle point. This is saddle point. And if you want to talk about this stationary point, तो stationary point का definition भी चाहिए आपको, तो that will be stationary point definition is, इसका opposite रहता, a point in which a point in which the function is neither nor, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में either or, either maximum और मिनिमम, राइट। ये हो गया आपका मैक्सिमम मिनिमम का वर्किंग ग्रुप। एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या रहता है एक्चुअली, ये जो फंक्शन वैल्यू है क्वेश्चन में कभी आपको डायरेक्टली दिए हुए रहती एफ ऑफ एक्स वाई, अदरवाइज कभी कभी ये फंक्शन की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट नहीं रहती, इनडायरेक्ट रहती। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पी क्यू आर एस टी। पी मींस जो भी फंक्शन एफ की वैल्यू वहां पे क्वेश्चन में है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली एफ की वैल्यू को विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और ये डबल एक्स का मतलब जो एक्स आया था उसको एक और बार करना है, राइट। पी क्यू आर एस टी नहीं करें, sorry I forget to write t value. T means f double y, two times differentiation with respect to y, then equating p and q to 0। यहाँ पे p वैल्यू आ जाएगा आपके पास और ये q वैल्यू, दोनों जो भी आंसर आएंगे इक्वल टू 0 करने से आपको क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं जहां फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम हो सकता है। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर तो यहाँ है आपके पास, टी इधर मिलेगा आपको, माइनस एस स्क्वायर भी यहाँ पे मिलेगा आपको। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन, और आर की वैल्यू, और ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आएंगे उसमें ये जो पॉइंट्स आएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। अब एक सवाल ये पैदा होता, स्टेशनरी पॉइंट एक आ सकता, दो आ सकते, तीन आ सकते, चार आ सकते, पांच आ सकते, छह आ सकते, 10 आ सकते, 100 आ सकते। जितने भी स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे we have to check the RT minus S square value at each and every stationary point। तो ये cases arises होते हैं। If suppose RT minus S square is less than 0 at this point, and we have to check immediately R value at the same point, if both are less than 0 then the function is maximum। उल्टा है देखिए, less than 0 को maximum। Now RT minus S square less than 0, R greater than 0, then the function is minimum। ठीक है। नाउ इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यहाँ दोनों केसेस में लेस देन आ रहा था, बट अगर इमीडिएटली ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट मींस अ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मैक्सिमम भी नहीं होता, मिनिमम भी नहीं होता। नाउ फोर्थ केस विल बी आर टी माइनस एस स्क्वायर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज इक्वल टू 0, देन वी आर अनेबल टू डिसाइड द नेचर। इसमें आपको कुछ भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, जरूरत नहीं है, यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं। तो ये था आपका वर्किंग रूल। एक बार कहीं भी आपको डाउट है इमीडिएटली बताइए मेरे को, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अदरवाइज अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है इससे रिलेटेड। एक सिंपल क्वेश्चन से मैं इसका स्टार्ट करूंगा सोल्यूशन। पहले तो आप एक्स वाई की जगह पे पी क्यू आर एस टी आ सकता है, राइट। जी बोलिए फिर से। एफ एफ ऑफ एक्स और वाई की जगह पे हाँ, पी कुछ भी आ सकता एक्चुअली है, अपन पी क्या कर क्यू रहे हैं, आर। एफ को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करके उसको नाम दे रहे पी बोल के, ठीक है ना। ओके पी आंसर पी नहीं आएगा उधर, जो भी इसको कर रहे हैं अपन एफ एक्स। मैं एक सिंपल एग्जांपल से पार्शियल डेरिवेटिव कैसा करते हैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल से ओके बताऊं, ठीक है ना।
I'll ठीक be है। taking the next page. Now, with the help of the example, I will try to show you what is, no, actually how to find out the PQRST values. अपन पूरे steps नहीं करेंगे आज। आज जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं, और कल के क्लास में आपको बता, शायद कल मैं क्लास नहीं लूंगा आपको। Sorry, tomorrow we don't have the class. Okay, note down. Tomorrow we don't have. Monday we continue. Okay. ओके ओके। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आज अपन। फर्स्ट एग्जांपल इज, suppose you have a function values like that. F of x comma y is equal to, we have here x cube y square minus x power 4 y square minus x cube y cube. Suppose this is your function value. Okay, क्वेश्चन में फंक्शन है सपोज, और आपका फंक्शन कुछ इस तरह से है, फंक्शन में x और y दोनों भी है। तो अपन कैसा फाइंड आउट करेंगे? देखिए, पी क्यू आर एस की स्टेप 2 कर रहा हूं मैं। P means we have to differentiate this value of f with respect to x partially. पार्शियली का मतलब क्या होता है वो भी एक बार देख लीजिए। खाली x को वर्क करना पड़ा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², y को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज रखना है, माइनस x पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x करे, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x पावर 3, एक कम करना है, ये y² अगेन एज इट इज, माइनस x क्यूब का 3x², ये y³ एज इट इज। आपको और अच्छा समझने के लिए एक और एक एग्जांपल, जब भी अपन ये डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई कर रहे, देखिए x पावर n का फार्मूला, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, nx पावर n-1। सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x² करें, so then n value is 2, 2x power 2-1, so then obviously it is becomes 2x only, x² का 2x। Similarly, if you want to find out the derivative of x to the power of 3, that is becomes 3x power 3-1, which is nothing but 3x²। जो काम आप यहाँ पे करे थे अभी, ये वाला दिख रहा आपको, ये वाला x³ का 3x² करे ना, यहाँ पे भी करे थे कि x³ का 3x²। अब x पावर 4 को कैसा करेंगे वो भी देख लीजिए आप, x पावर 4 d/dx ऑफ x पावर 4, x power 4 means what do you say, 4x power 4-1, which is nothing but 4x power 4-1 is 3, जो आंसर यहाँ पे आया था अभी। अब ये वाला, ये दिख रहा है, ये है ना। तो इस तरह से अपन करते डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है सबको? ओके ना जी। यस। नेक्स्ट वी कैन गो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू का मतलब है, क्यू एक पटने में एफ को विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू वाई करने का मतलब ये है, एक्स को कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहे, ये x³ एज इट इज रख रहे। जैसा x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो y² का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, माइनस ये x पावर 4 को कुछ भी नहीं छेड़ रहे अपन, y² का डेरिवेटिव हो जाता 2y, ठीक है, माइनस ये x³ को अपन कुछ नहीं कर रहे, y³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y। ऐसा करते हैं अपन p/q। अब आएंगे r के पास। r का मतलब है आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है f की वैल्यू को विथ रेस्पेक्ट टू x। एक बार ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर करे हुए है ना, ये 3 तो एज इट इज रहेगा, ओके, ये y² भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ x² को डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो वाला x² है, अभी आपको एक एरो के जरिए भी बता देता हूँ, ये x² का डेरिवेटिव जब आएंगे ना नीचे, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, 2x, है ना, माइनस। अब देखिए विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे, मतलब किसको नहीं छेड़ रहे अपन, 4 को नहीं छेड़ रहे, और ये y² को भी नहीं छेड़ रहे,
और ये जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोर्ड पे लिखे हुआ है ना ऑलरेडी, बोलिए एक बार। कमन, एक्स क्यूब का 3x², राइट। यस। आंसर दे, आंसर देने से मेरे को भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ये वाई क्यूब एज इट इज। अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और जब आप करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर इज 2x, 2x। है ना। एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये जो सिंप्लीफाइड होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 2 6 xy²। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4 3 12 x² y² माइनस 3 2 6 xy³ ये आ गया आपका पी क्यू आर की वैल्यूज आ गया। नाउ फाइनली पी क्यू आर के बाद एस भी करना है और टी भी करना है, पी क्यू आर एस टी करना है ना। तो करेंगे एस, एस का मतलब एफ एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना है। एक्स वाला टर्म यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है, देखिए ये वाला टर्म, ये है एक्स वाला टर्म, उसको विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना, मतलब किसको छेड़ना नहीं है, एक्स को नहीं छेड़ना है, खाली वाई स्क्वायर को करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ जिसको नहीं छेड़ना है उसको वैसे ही रखता हूँ, जिसको छेड़ना है उसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे। माइनस 4x³ एज इट इज रखेंगे, इसको नहीं छेड़ना है बाजू में रखेंगे। -3x² एज इट इज रखेंगे, इसको नहीं छेड़ना है बाजू में रखेंगे। अब उसके आंसर्स लिखेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ना वाई स्क्वायर अगेन 2y, y³ अगेन 3y²। समझ में आ रहा है ना, सब परफेक्ट बोल रहा हूँ मैं आप। अब इसको सिंप्लीफाई यस। करो, 3 2 6 x² y माइनस 4 2 8 x³ y माइनस 3 3 9 x² y हो गया, पी क्यू आर एस हो गया। अब फाइनली विद टी करेंगे ना, टी टी मीन्स टी मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट आवर वैल्यू ऑफ एक्स, नॉट एक्स सॉरी, विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है, वाई को एक और बार करना है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए वाई को करना है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब क्या बचा उसमें, वाई को अगर अपन छोड़ दिए तो 2x³ बचा, वाई का बाद में देखेंगे क्या होता कि -2x⁴, ये वाई का एक्चुअली 1 हो जाता ना, वाई तो सिंगल है, वाई का विथ रेस्पेक्ट टू वाई मतलब 1, डायरेक्ट आंसर भी लिख दे रहा हूँ। माइनस ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो 3x³, और यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर y² का 2y, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आंसर आ जाएगा 2x³ माइनस 2x⁴ माइनस 6x³ ऑफ y। तो ये अपने पूरे पी क्यू आर एस टी के पूरे वैल्यूज आपके पास आ गए। मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन ही कर दिया डायरेक्ट आपको, भी आगे नहीं करूंगा उसको, मैं पहले आपको अच्छे से समझाऊंगा। कल के परसों की क्लास में मैं आपको डायरेक्टली पी क्यू आर एस टी कैसे करते बताऊँ। अब ये जो वैल्यू आ गई पी की, उसको इक्वेशन 1 बना दिए, और क्यू की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दी। ये दोनों वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द स्टेप 2, अब देखिए प्रीवियस स्टेप में अपन ये फंक्शन गिवन था आपके पास, ओके यल वेल एंड गुड, पी क्यू आर एस टी फाइंड आउट कर लिए, यस वेल एंड गुड। अब आएंगे अपने पास इक्वेटिंग पी एंड क्यू टू 0, तो ये जो भी वैल्यूज आई थी आपके पास पी और क्यू की, ये आई थी पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, उसको 0 से इक्वेट करना। आपको समझने के लिए बता दे तो मैं 0 से इक्वेट करता हूँ वो कैसा बनता, यस यहाँ पे बता देंगे। 0 से इक्वेट करें तो ये वैल्यू ऐसी हो जाती, 3x² y² -4x³ y² -3x² सिंपल इक्वेट टू 0, तो इक्वल टू 0 कर देना, खत्म होता है और कुछ भी नहीं। इसको भी इक्वल टू 0 करो कर रहा हूं नहीं, तो उसको क्या करेंगे अपन, 2x³ इंटू वाई माइनस 2x⁴ इंटू वाई माइनस 3x³ इंटू y²। इसको भी क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है।
इक्वल टू 0 करने के बाद ये दोनों इक्वेशंस जो आए थे अभी अपने पास, इन दोनों को सॉल्व करने से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो पॉइंट्स को अपन देख सकते हैं वर्किंग रूल में, क्या बोल रहे हैं वो पॉइंट्स को अपन, इक्वेटिंग p and q to 0 we get what, tell me what, हेलो, हेलो। या हाँ बोलिए कौन से पॉइंट्स मिलेंगे आप, स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट, पॉइंट्स। स्टेशनरी या पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स और एक्सट्रीम वैल्यूज, ये आने के बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर करना और फिर उसको और आगे प्रोसीड, ये आपका पूरा का पूरा था वर्किंग रूल। और उससे रिलेटेड मैं एक को रिलेट करके एक क्वेश्चन को भी करा ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। यही काम आपको करना है, ठीक है, अच्छे से आप ये यस। क्लास को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके। संडे तो क्लास, ये संडे तो पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। एवरी संडे और ओनली दिस? आई टेल यू, जब भी मैं बिजी हूँ बोल देता हूँ आपको, कल संडे तो ओके। मुश्किल है, फिर मंडे से कंटिन्यू करेंगे। ओके कहीं सर। ना कहीं कुछ भी कोई भी स्टेप में आपको डाउट है आप इमीडिएटली पूछ लेना है अभी से। और ये डेरिवेटिव्स के फार्मूले बहुत डिटेल में बताया देखिए मैं आज की क्लास में, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स के जी। फार्मूले अगर आपको कहीं नहीं आ रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड बोल के आप मैसेज कर दो, या समझ में नहीं आया तो आप बोल दो, मैं आपको रफ कॉलम में अलग से बताऊंगा। बाईपीसी स्टूडेंट्स है ना, तो जल्दी समझ में नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता, सो नो प्रॉब्लम, nowadays I am having the time, I can give you the time, but practice the problem every day. ओके सर। So just practice the class, today's class. Tomorrow we can start doing the problems. Problems are very lengthy. Maybe 2 problems will take the entire session because very lengthy questions are there. And to understand this concept, I'll give you the related recording also. You can go ओके through the सर। recording. Recording will definitely help you to understand the concept more clearly. But still the classes will be going on. अपन अभी तक क्या कंप्लीट करें वो भी आपको मैं बोल दिया, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, कॉचीज थ्योरम, जैकोबियन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमा कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी करना है। उसके बाद ये यूनिट्स खत्म हो जाता है, ठीक है, यस। यूनिट को खत्म करने यस। के लिए अपने पास एक और टॉपिक है, यू कैन डिस्कस दैट लेटर ऑन, ठीक है, ओके। ओके, आई विल एंड अप दिस मीटिंग, थैंक यू सर। ओके।